Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Good evening and welcome to the Tuesday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताज़ा खबरों को लेकर हाजिर हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइंस से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Centre provides additional allotment of 2 lakh tons sugar in domestic quota for the month of August to ensure reasonable prices all over the country. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari launches Bharat New Car Assessment Program to improve road safety. And key domestic indices end almost flat. Sensex closes above 65,200 level. Nifty settles near 19,400 points. केंद्र ने देश में चीनी समुचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए अगस्त महीने के हेतु 2 लाख टन अतिरिक्त घरेलू कोटे का आवंटन किया। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने देश में सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत न्यू कार असेसमेंट कार्यक्रम लॉन्च किया और घरेलू शेयर बाजार में प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के हुए बंद। सेंसेक्स 65,200 के स्तर से ऊपर बंद हुआ। निफ्टी 19,400 के नजदीक दर्ज हुआ। Market Mantra, Market Mantra. We are joined in the studio by senior journalist Udain Ray. A warm welcome, Udain. Thank you, Rajesh. And we proceed with the first headline story. The centre has provided additional allotment of 2 lakh tons of sugar in domestic quota for the month of August. The Consumer Affairs Ministry said the additional sugar in domestic market will ensure reasonable prices all over the country. The ministry said the additional quota of 2 lakh tons is being allocated, keeping in view the strong demand of sugar for the upcoming festivals of Onam, Raksha Bandhan and Janmashtami. It said this will be over and above 23.5 lakh tons already allocated for the month of August this year. The ministry said despite 25% increase in international sugar prices in last 1 year, the average retail price of sugar in the country is about 43 rupees per kilogram. There has been less than 2% annual inflation in the country in sugar prices in the last 10 years. Udain, this is good news for the consumers. In fact, good news for the consumer sentiments post the tomato and onions inflationary rates. Absolutely, and the price situation obviously is under watch as far as the government is concerned and RBI is concerned. So they're keeping a very strict vigil on it, and these kind of steps would be taken, Rajesh. And till the your festival season comes, we see this every year. Food prices do go up during monsoon period, but also what's happening, Rajesh, is as you have mentioned, international prices have been also going up. So that also puts in significant pressure. So that is the additional dynamic that obviously the government. But again, noteworthy is that in last 10 years there has been inflationary gain of only 2%. Yeah, I mean that's significant because if you look at, you do a annual inflation rate average, it's
it has had some really high years. So it's above 6.5 over the last 10 years. So if you compare that with this, I mean, this is like Yes, pretty good. amazing. Yeah, amazing. उदिन यहाँ पर एक मनोरंजक सा कह लेंगे सवाल ये उठता है कि आम उपभोक्ताओं के नज़रिए से ये मिठास वाकई यानी तारीफ़ के लायक है, लेकिन यदि हम चीनी उत्पादक कंपनियां सोचें या गन्ना उत्पादक के नज़रिए से सोचें तो यानी चीनी के मूल्य का अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दाम बढ़ने के बावजूद अपने यहाँ स्थिर बने रहना, उनके नज़रिए से उस पर क्या टिप्पणी करना चाहिए? देखिए, ये तो चैलेंज बना ही पड़ा हुआ है. देखिए, काफ़ी जहाँ भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ लग रही हैं, दूसरे भी कृषि उत्पाद में एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन, वहाँ पे नेचुरली असंतोष तो है. पर मनोज, मैं ये कोई नई बात नहीं है. जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हैं, कृषि से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि आप एक दूर अवधि का लॉन्ग टर्म एक प्लान होना चाहिए. हम कभी कभी मार्केट में सीधे चले जाते हैं, सीधे ऑफलोड कर देते हैं, फिर कभी कहते हैं हम रोक देंगे. आप फिर सीरियस प्लेयर्स, आप स्विंग प्लेयर बने रहते हैं, सीरियस प्लेयर बनते नहीं हैं और जाके मार्केट का बैलेंस आप ख़राब कर देते हैं. अब देखिए, राइस एक्सपोर्ट्स के ऊपर हमने रोक लगाई है, जो कि हमारे कारण की वजह से लगाई ज़रूर है, पर उसके वजह से डिस्ट्रप्शन हो गया. यूएन बॉडीज़, दूसरे लोग कह रहे हैं, दूसरे देश कह रहे हैं कि आप इसको पुनर्विचार करें. तो एक लॉन्ग टर्म प्लान होना चाहिए कि एक स्विंग प्रोड्यूसर की तरह जब एक्सेस हो गया तो जाके अपने मार्केट में छोड़ दिया, फिर कभी आपने रोक दिया, तो फिर ना तो उत्पादक जो हैं, जो प्रोसेस करते हैं, जो एक पूरा बिजनेस का जो चेन बनता है, सप्लाई चेन, उसमें एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी सी रह जाती है. जो कि मतलब अब हम अगर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं पायदानों में इकोनॉमी के हिसाब से, ग्लोबल इकोनॉमी, तो हमारे पास ये इस टाइप के जो शॉर्ट टर्म नी जर्क जो मूवमेंट्स है ना, उनसे निपटने का एक तंत्र होना चाहिए, हमारे बेहतर तंत्र होना चाहिए. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान बचाने के महत्व पर जोर दिया है. आज नई दिल्ली में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम भारत एनकैप का शुभारंभ करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश में हो रही गलतियों से निपटने के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और सहयोग की बड़ी आवश्यकता है. अपने संबोधन में उन्होंने देश में ऑटोमोबाइल उद्योग का आकार 15 लाख करोड़ रुपए करने की सरकार की आकांक्षा के बारे में भी बताया. भारत एनकैम पहल के बारे में श्री गडकरी ने बताया कि इससे देश में वाहनों की सुरक्षा और गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही सुरक्षित वाहनों के निर्माण के लिए मूल उपकरण निर्माताओं के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता भी शुरू होगी. उदयन, इसे हम एक महत्वपूर्ण शुरुआत कहें. देश में जो परिवहन पूरा सेक्टर है, यानी कह लें जो पूरा ऑटो सेक्टर है, साथ ही जो सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, उन दोनों का एक बेहतर तालमेल आने वाले दिनों में हम देख सकेंगे. बिल्कुल. देखिए मनोज, हम लोग कैचअप प्ले करते रहते हैं, विदेश के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके बराबर के स्टैंडर्ड्स करते रहते हैं. अब हम जब ग्लोबल अगर लीडर आपको बनना है, आपको वैसी एक चीज़ का उत्पादन करना है, इंजीनियरिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, जो कि आप ग्लोबल लेवल एक विकसित देश में भी वो एप्लीकेबल हो, तो गैप ना हो. फिर आप ये तर्क ना दिया जाए कि देखिए हमारे यहाँ पे यही चल सकता है. तो जैसे सड़कें होंगी उस हिसाब से आपके वाहन बनेंगे. तो जब आप सब चीज़ों में अपग्रेड कर रहे हैं तो उसमें एक ओवरऑल अपग्रेडेशन की सख्त ज़रूरत है. And then during his speech, the minister also expressed the government's ambition to make the automobile industry of 15 lakh crore rupees. So how will that be achieved? I think Rajesh, I mean, a 10-second history lesson. Like, if you look at, say, in mid-90s, we were probably selling 250,000 cars. And look at the numbers now. So, it's not going to happen because you're going to make cheap cars. That's not going to happen. With people's increasing income, people will start buying
cars, and of course people typically graduate from two-wheelers to cars, so we have huge two-wheeler population, and our two-wheelers are of a great standard. Now when that graduation happens, we just have to make sure that people who want to graduate from one to the other, it works out well. And also this automobile sector is not just about private ownership, it's also about public transport as well, whether it's electric or any other source, and the traditional kind of engine powered vehicle. So there has to be obviously a 360 degree view of it, but that will happen. There's no problem out there. And when your economy also grows, there's also the freight transport sector. So as we all know, of course there's rail, there's air, but when you're doing bulk in our country, it's either got to be through rail, which is their ambitious plans, but my sense is it will be more of road transport and through that vehicle, simply because road expansion is at a dizzying is happening at a dizzying pace. So this new program, Bharat New Car Assessment Program, is going to also give a boost to Make in India program of the government, because as the minister said, they would like to make India as the number one manufacturing hub through this. Yes, of course, Rajesh, and because when you make in India, then the cars will become more and more accessible. Right now, there would be certain cars, certain people from certain economic strata who are probably buying an iPhone, or they're buying other premium products, but they might not be able to graduate to a car of that stature or technology. So when you're going to make ensure that you're going to make in India, those things are going to happen, and you will also find manufacturers actually trying to do that. There are lots of manufacturers who have come and gone. So all these foreign press and foreign media, they tend to come up with these articles of why it's a very tough country, etc. But we have got plenty of foreign manufacturers who are doing superbly well. So it's a question of getting the act together, getting it right. And why should Indians roll out the red carpet? I mean, go to extraordinary lengths. There has to be fair competition, which the minister is talking about. There has to be fair conditions out there, competitive conditions have got to be there, and those things will happen. Why would they say it's difficult to work? Because we have so many plans been put in place for ease of doing business. Yeah, but Rajesh, you need to remember there are two large American automobile companies, without taking names. I've actually mentioned the nationality now. They have gone out. So the media from that country will see, we told you it's a tough place. That's not what it is. Look at our numbers. I just told you what the numbers were there in mid-90s. We are across the segments, cars are being sold, and some of the premium cars are also being the sold. focus is on that these Yeah, days. absolutely. So that over a period of time, what's also happens, Rajesh, is people who are even driving an entry-level model, they see the features and the safety and other things of absolutely top-end cars, and they would want it there. So sometimes what happens is the innovation and offering also gets modified because people are constantly seeking it, and a manufacturer will try to outdo the other by introducing that and say that, see, we are giving you this which is there in the high-end model, Correct. but now we are giving it to you at an affordable price. उदिन हम ये उम्मीद करें कि उपभोक्ताओं को बेहतर सुरक्षा अब आने वाले दिनों में, जो यानी ऑटो जगत है वहाँ छोटी बड़ी गाड़ियों में, या कह लें कि जो दोपहिया वाहन है वहाँ भी देखने को मिलेगी इस नीति से। देखिए, सबसे बड़ी बात मनोज ये है कि ये तो अवेलेबल था, उपलब्ध था, पर क्या होता है जैसे ही सुरक्षा के मानक लागू होने शुरू होते हैं। वो तो एक है, मानक लागू शुरू होता है। दूसरा है कि उसके लिए खर्चे मतलब उन मॉडल्स में खर्चे बड़े हो जाते थे। पर अगर सरकार ये कहती है कि सब में ये सुरक्षा के जो फीचर्स हैं वो होने ज़रूरी हैं, जैसे गाड़ी आप अगर वाहन चलाते हैं तो आपके पास बीमा होना ज़रूरी है, अगर इस टाइप की बातें हो जाती हैं तो एक पूरे इकोसिस्टम में बदलाव तो आ जाता है, क्योंकि
इतने लोग अगर सड़कों पे उतरेंगे, गाड़ियां चलेंगी, तो सुरक्षा के बारे में ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि दुर्घटनाओं में कमी आ रही है, वहाँ पे तो अच्छी खासी बढ़ोतरी चल रही है अलग अलग जगह में। तो वहाँ पे एक कुछ नीतियाँ बनानी पड़ेंगी जिससे इसमें एक अंकुश सा लगा रहे। Moving on, Union Chemicals and Fertilizers Minister Dr. Mansukh Mandavia has reviewed the availability and use of fertilizers with state agriculture ministers in New Delhi today. At the outset, Dr. Mandavia informed all the states that there is adequate availability of fertilizers in the country with the present level of 150 lakh metric tons of stocks. He assured that there is sufficient stocks in the country for the ongoing Kharif season and for the forthcoming Rabi season as well. In his speech, the minister highlighted the necessity of reducing the excessive use of chemical fertilizers to save the health of soil. During the meeting, Dr. Mandavia also reviewed the progress of nano urea, nano DAP and the promotion of alternate fertilizers at the field level and steps initiated by the states in this regard. Now this again is an assurance for the farmers as well. Absolutely, and we need to get this piece right, Rajesh. So it's an important input, as we all know, and the availability and at a sort of affordable sort of prices needs to happen, so that we don't get any other roll-on effects like higher prices, etc. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार, जहां आज प्रमुख सूचकांक बिना किसी खास उतार चढ़ाव के बंद हुए हैं। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 65,200 के स्तर से ऊपर उठकर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 19,400 के नजदीक बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बाद भी बाजार में निवेशकों के बीच कोई खास लिवाली नहीं की गई। प्रमुख सूचकांक मामूली बढ़त में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 4 अंक बढ़कर 65,220 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 3 अंक बढ़कर 19,396 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझौली कंपनियों के शेयरों में आज बिकवाली की गई। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.94% घटकर बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.89% की गिरावट हुई। The key domestic share indices today ended almost flat. The BSE Sensex closed above 65,200 level, while the NSE Nifty ended near 19,400 points. Both the indices added marginally amid positive global cues. The Sensex finished 4 points up at 65,220, while the Nifty settled 3 points up at 19,396. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 0.94% down and the small-cap index slipped 0.89%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, 16 rose and 14 fell. NTPC climbed 1.3%, Mahindra & Mahindra rose 0.8% and Wipro added 0.7%. On the other hand, Jio Finance declined 5%, Bajaj Finserv fell 0.18% and SBI slipped 0.6%. In sectoral indices at BSE, 18 after 20 ended in positive territory. Utilities sector index climbed 1.6%, power surged 1.4% and capital goods rose 1.3%. Once again, Bajaj Finserv fell 0.8%. The overall market breadth was positive as shares of 2,212 companies rose, while shares of 1,445 companies rose. A total of 128 shares remained unchanged. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में आज 82 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक अंतर्दिवसीय कारोबार में 103.27 पर चल रहा था। उदयन बाजार में आज की गतिविधि पर हम आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। दुनिया भर की बाजारों में कल भी थोड़ी तेजी देखने को मिली। एशियाई शेयर बाजार भी मजबूती के साथ बंद हुए। अपने यहाँ कोई खास उत्साह नहीं देखा गया निवेशकों के बीच। किन अर्थों में ले रहे आज के कारोबार को?
देखिए मनोज, एक तो कारण ये है कि आपके जो विदेशी संस्थान हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, उन्होंने बेचा है। तो वो एक बड़े, जब भी मार्केट में बाउंस रहता है, अपवर्ड मूवमेंट रहता है, उनका एक बहुत एक्टिव सक्रिय रोल रहता है। दूसरी बात है, मार्केट जो है क्यूज़ ढूंढ रही है, जो क्यूज़ जो हैं कुछ सॉलिड क्यूज़ ढूंढ रही हैं जिससे वो उनको आइडिया मिले। अब सबकी निगाहें टिकी हुई जेरोम पावल, जो यूएस फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं। वो एक उनका सालाना मीटिंग होता है जैक्सन होल में, तो शुक्रवार को वो एक स्पीच देने वाले हैं। तो वहाँ से लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से कुछ उनको अंदाज़ा हो जाए कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको बढ़ाने के बारे में फेडरल रिज़र्व का कि आगे अप्रोच क्या रहेगा और कितने रेट हाइक्स और होंगे। तो अगर मैं आपको संक्षिप्त में कहूँ, मार्केट ये ढूंढ रहा है कि ये जानने की कोशिश कर रहा है कि कितने बार और यूएस फेडरल रिज़र्व इंटरेस्ट रेट ब्याज दर को बढ़ाएगा। उनको वो मिल नहीं रहा। जब उन्हें लगता है कि नहीं अब ये बंद करने वाले हैं, तब उत्साह आ जाता है। जब लगता है कि नहीं और बढ़ेंगे, जैसे मिनट्स निकले थे फेडरल रिज़र्व की मीटिंग के, जब अगर लगा तो तब डाउनवर्ड मूव रहा। तो ये एक क्रिटिकल, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं एक टीनेजर जैसे बिहेव करता है, मूडी टीनेजर, उस तरीके से जो क्लियर नहीं होता है कि क्या होने वाला क्या नहीं, अनिश्चितता, उसकी तरह मार्केट का मूड है। और आज अमेरिका से कुछ डेटा आने वाला है हाउसिंग प्राइसेस के बारे में, मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, उससे थोड़ा बहुत हो सकता है, पर ये क्यूज़ जो हैं वो उनको ढूंढ रहा है। दूसरा, जो यूएस में बॉन्ड यील्ड्स हैं उसमें एक उछाल रहा है, और जब यूएस में डेट मार्केट में उछाल रहा था, क्योंकि वो एक सेफ मार्केट, लो रिस्क मार्केट माना जाता है, तो इसलिए भारत जैसे मार्केट जिनको इमर्जिंग मार्केट्स में लिया जाता है, वहाँ पे रिस्क आंका जाता है। तो अगर रिस्क फ्री या लो रिस्क में आपको रिटर्न बेहतर मिल रहा था, नेचुरली आपके मूवमेंट उस तरफ हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि डॉलर्स में भी स्ट्रेंथ रहा है, रुपए दबाव में रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो मार्केट्स को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे मार्केट्स में पीछे रनअप काफ़ी अच्छा रहा है। तो कई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मानना है कि हमारे वैल्यूएशंस कई जगह में काफ़ी रिच हो चुके हैं। तो हो सकता है एक कंसोलिडेशन, एक ठहराव सा रहे और फिर क्यूज़ लेके आगे बढ़े। But then, as you said, people have been constantly selling exposure in China. I'm saying that, and buying Japan and India. Yeah. And they've also been concentrating quite a bit on mid caps. So, what is the reason behind that? You know, the FIIs, though today was the selling pressure on them, but why? What was the reason for them to concentrate more on mid caps in their buying behavior? It's almost like a funnel, Rajesh. I mean, there could be other reasons, but I'm just giving you a very cliched sort of an explanation. What happens is when when you go to a country, you first go to the most prominent names. If they get overbought, then where do you go in equities? You will obviously have to go to mid caps and then small caps. But in these stocks or counters or whatever you want to say, the floating stock will not be that much. The number of shares for a top line 50 top 50 company and say a 250th ranked company, the floating stock is unlikely to be the same, you know. So after a point of time, what happens is, you are not getting that option. They also get richly valued very quickly. And then also the issue also, Rajesh, is if you want to offload, you want to get out of it, am I going to face liquidity issues? You know, if I want to liquidate at the right time, at the right price, will I be able to get off? So these are some of the things that typically happen. I'm sure at least that will explain 20-30, if not 40% of what you mentioned. How do you see the banking stocks going forward? Because in the US, there has been a sharp cut in the ratings by Moody's on 10 US banks.
And also the Fitch is also saying that they are going to be downgrading a lot of banking stock ratings. So will that have repercussions on our banking system? It may not have repercussions on our banking system, but it will make a difference in terms of the stock market mood, because there are some of the most profitable players have been banks. And Rajesh, the pressure is coming from rising interest rates out there, because the retail guys, people like you and me who have taken loans, they are now suddenly realizing that it's not so much fun and games anymore. The loans have to be repaid, so they're getting reset, and that pressure is coming. The incomes will obviously not keep pace, so there is going to be a little bit of pressure on that end. आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, चलते हैं वैश्विक शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले एशिया के प्रमुख शेयर बाजार, जहां आज लिवाली देखने को मिली है। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स, हांगकांग का हिंग सेंग और जापान का निक्केई 225 तीनों सूचकांक आज 0.9% लाभ के साथ बंद हुए। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 0.3% की वृद्धि हुई, जबकि सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.2% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी समाचार तैयार किए जाने तक तेजी दिख रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.7% ऊपर चल रहा था। फ्रांस का CAC 40 और जर्मनी का डेक्स दोनों सूचकांक 1.2% लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। The three major US share indices jumped as investors were optimistic amid gains in technology-related stocks. The Nasdaq ended more than 1.5% higher yesterday. The yield on 10-year Treasury notes hit highs last seen during the great financial crisis in 2007 as investors looked warily towards a meeting of central bankers which will convene on Thursday at Jackson Hole. Federal Reserve Chair Jeremy Powell is due to speak on Friday. The Nasdaq Composite Index climbed 1.6%, the S&P 500 Index rose 0.7%, and the Dow Jones Industrial Average added 0.3%. So what are your expectations from this meeting that is about to take place on Thursday at Jackson Hole? Rajesh, to be honest, I would expect them to reiterate their inflation fighting, combating efforts that's going to go on. I don't think they're going to say that we have had enough, because they would like to, remember, they want to go back to 2%. Whatever it's worth, they want to go back to 2%. And so that is something that they're going to say. And also, Rajesh, I don't think markets have quite understood or come to terms with the fact that inflation, which went up quickly, and interest rates which went up quickly, are not going to come down in a hurry. So unlike us, they are not used to a certain level of prices and interest rates. Like we are okay with 4 to 6%, they are not. For decades they have not been used to. So they're kind of clueless in that sense. So people like me who are feeling sorry about them, sorry for them, but that's what it is. So they will eventually get used to this, and they'll come to this reality that things are not going to. It's not like a trampoline. You just jump up and then you come down, and it doesn't happen like that. So that's just something that they're going to, and they're going to see again that the Federal Reserve Chairman is going to say that we're going to keep fighting inflation till it happens, and they're going to say we're going to base it on data. So that is exactly what they have been saying, and it's just the market wants a different news, and they're trying to read something in it. So will China be giving any kind of news and add to any sentiment, positive or negative? They're going forward? to keep trying to do rate cuts. They'll obviously have to do some kind of fiscal stimulus, and they'll obviously have to fix their real estate and tech, without which things are not going to turn around at all. And they'll obviously have to do something with their youth unemployment, because that's also, if they're betting on consumption, then that's something they'll have to do something about it. आइए अब अंत में चलें सर्राफा बाजार की ओर। सोने चांदी के भाव आज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में थोड़े से चमक अपनी बिखेर रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार तैयार किए जाने तक 160 रुपये बढ़त के साथ
58,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। वहीं सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 290 रुपए उछलकर 71,950 रुपए प्रति किलो के स्तर पर थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर ध्यान दें तो नाइमेक्स पर अंतर्दिवसीय कारोबार में समाचार कई तैयार किए जाने तक सोना $1,931 10 सेंट प्रति औंस पर चल रहा था। चांदी भी मजबूती के साथ $23.80 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से उदयन आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनोज। And thank you for being with us, Dan. And before we close, the headlines once again. Centre provides additional allotment of 2 lakh tons of sugar in domestic quota for the month of August to ensure reasonable prices all over the country. Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari launches Bharat New Car Assessment Program to improve road safety. And key domestic indices end almost flat. Sensex closes above 65,200 level and Nifty settles near 19,400 points. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. Market Mantra.